Today we'll study a new topic which is called project management or network analysis. What do you mean by a project? A project means a particular work which are need to be done. Every work has some activities. By using some activity, the project can be completed. For example, we are going to build a building. That is our project. The project is to build a building. Activity means arranging the raw materials is one activity. Arranging the labor is another activities. Foundations is another activities. Pillar is another activities. So when all the activity will complete, then the project work will be complete. So whenever we are doing project, there should be some cost and time. Within some cost and time, we can complete the project. So you are studying the project management for minimizing the time and cost for producing the product or for achieving the project. Okay, so what do you mean by a project? Meaning of project. Meaning of project. What do you mean by a project? It is nothing but non-repetitive work. It is nothing but non-repetitive work to be performed within some time and cost. That means what is a project? A project is a non-repetitive work. That means a project means a work which should be done at a time. It should not be repetitive. It is a non-repetitive work. So मते गोटे काम करियार अछि, से कामडा होछि मो पे प्रोजेक्ट. मते गणेश पूजा बनार अछि, सेटा होछि मोर प्रोजेक्ट. मते पिकनिक अरेंज करियार अछि, सेटा होछि प्रोजेक्ट. नेक्स्ट ईयर पिकनिक टा आउट नुवा प्रोजेक्ट हे गला. तो मो प्रोजेक्ट होछि मते एनुअल फंक्शन मैनेज करियार अछि, मोर घर उडे तयारी करियार अछि. सो दिस आर द प्रोजेक्ट. So what is a project? Project is nothing but a non-repetitive work. That means we need to do once only to be performed within some time and cost. किछि पैसा खर्च करके किछि टाइम भीतर हमर पर्टिकुलर काम करियार अछि, से कामडा हम करछे प्रोजेक्ट. ओके. There may be two types of activities. Two types of activities are involved in every project. There are two types of project. There may be two types of activities are involved in any project. That is number one, critical activity, and number two, non-critical activity. Okay. There may be two types of activities are involved in every process. Activity means division of work. For example, मते एनुअल फंक्शन बनायर अछि. एनुअल फंक्शन रे मु जणो कहबी कि तू स्पोर्ट्स पे ध्यान दो. स्पोर्ट्स दायित्वटा जणो देले तो स्पोर्ट्स इज वन एक्टिविटीज. जणो कहली तू कल्चरल प्रोग्राम रो देखिबो. जणो कहली तू मीटिंग पार्ट टा देखिबो. जणो कहली तू प्राइज पार्ट टा देखिबो. जणो कहली तू भोजी अरेंजमेंट टा देखिबो. जणो कहली तू चीफ गेट को देखिबो. सो मु टोटल प्रोजेक्ट टा कोन करले सब डिवाइड छोट छोट काम कर देली. सब छोट छोट काम जको मु कहू से एक्टिविटीज. So each project has two types of activity. Some are critical activity and some are non-critical activity. Okay. What do you mean by critical activity and what do you mean by non-critical activity? I will explain sometimes after sometimes. किस समय पर मु तुम जानिबो क्रिटिकल एक्टिविटी कोन, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी कोन.
सो पिलाने एबे तमे खाली जानि थाओ कि आमे जेतोल भी गोटे प्रोजेक्ट बनौचे प्रोजेक्ट बनले टाइम रे प्रोजेक्ट मींस व्हाट प्रोजेक्ट मींस ए नॉन रिपीटेटिव वर्क टू बी परफॉर्म विद इन सम टाइम एंड कॉस्ट गोटे पर्टिकुलर गोटे कामटी आमे करबा को कोचे प्रोजेक्ट आ से कामडा आमे कोन कोचे छोट छोट सब डिवीजन कर दोचे छोट छोट काम रे बांटी दोचे मते गणेश पूजा करे अछि मो गोटे पिला कहली कि तू मूर्ति आनिबो जणो कहली कि तू पुरोहित कथा बुझिबो जणो कहली कि तू डेकोरेशन कथा बुझिबो आ जणो कहली कि तू भोग कथा बुझिबो आ जणो कहली तू विसर्जन कथा बुझिबो दैट मींस व्हाट कि मु टोटल वर्क को सब डिवाइड करले सब डिवाइडेड को आमे कहउचे कोन एक्टिविटीज आमे कहउचे एक्टिविटीज सो एमिति केते गुडे एक्टिविटीज कंप्लीट हेले जाय कि हमर प्रोजेक्ट ही कंप्लीट होय आमे जेति की भी एक्टिविटी करउचे से सब टू टाइप्स गोटे होचे क्रिटिकल एक्टिविटी गोटे होचे नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी और क्रिटिकल एक्टिविटी कोन नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी कोन विषय पर मु तुमको कहबी ओके देन नेक्स्ट diagrammatical representation diagrammatical representation of activities diagrammatical representations of activities involved in a project is called network. What do you mean by network? Network means diagrammatical representation of activities involved in a project. मोर गोटे प्रोजेक्ट करिया पई जेतुटा भी एक्टिविटी दरकार से सब जक एक्टिविटी को मोटे डायग्राम हिसाब से सजेक लिखली ताले सेवा कहउछे नेटवर्क बा नेटवर्क डायग्राम बोली कहउछे व्हाट इज द नेटवर्क और नेटवर्क डायग्राम द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्वड इन अ प्रोजेक्ट गोटे प्रोजेक्ट रे जेति की भी हमर अछंती एक्टिविटीज गुडा को से सब जाको हमें गोटे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करले हमें सेवा कहउछे कोन ना नेटवर्क एग्जांपल किमिति नेटवर्क सर गोटे एग्जांपल हम देतु किमिति हम डायग्राम करिवु नॉर्मली डायग्राम इमि थाए this is an example okay here 1 2 3 4 5 6 just I am giving the number so a this is a activity b this is a activity c this is a activity d this is a activity e this is a activity f this is a activity so these are the activities and this total things is called a network diagram तो फास्ट मो को काम करी मोर जो गणेश पूजा करे फिर फास्ट ए काम करी ए काम कोन ना ए काम वाला फास्ट मने करो मु मूर्ति किनि के आनी ए काम कोन हिची ना ए काम मने करो मु दीडे काम मिसई करछि बुझला मूर्ति किनि साला पर दीडा जने डेकोरेशन करछि जने इवनिंग टाइम में जने डेकोरेशन करे गला आउ जने कोड गला पूजा दिन छाणे पे गला ओके तो तापरे कोन गला एपडा आसी की पूजा करछि सेपडा लोक कोन करछली पूजा करा टाइम रे एपडा जा अलगा काम होछि होछि विसर्जन ए कामरा मन हमें ध्यान दोते कि हमरा मेंटेनेंस ठीक अछि कि नै पिला ठीक आछो नै दैट मींस हम कोन होला फास्ट ए कामरा करले ए काम पर ए दिले काम लागि लागि करले ए काम पर ए काम करला ए काम करे ए काम करे ए दिले जाय काम जोडी सदा सेडी ए एफ कामरा करला ए कामरा सब काम प्रोजेक्ट कंप्लीट होला क्लियर बुझा पड़छि दैट मींस ए जो गोटे गोटे गारो देखो पिला ने एटा होछि गोटे गोटे एक्टिविटीज गोटे गोटे गारो होछि गोटे गोटे एक्टिविटीज सब जक एक्टिविटीज कंप्लीट सेला हम जाने कि हमर प्रोजेक्ट कंप्लीट होला अब हमें जदि सही एक्टिविटी उडा वाला डायग्राम हिसाब लिखिया ताले सेटा कहउछने नेटवर्क क्लियर देन every activity has two nodes activity means for example this is a activity for example this is activity a एटा गोटे एक्टिविटी को चलने एटा गोटे एक्टिविटी सो गोटे एक्टिविटी माने गोटे लाइन वाला हम गोटे एक्टिविटी तार दीटा नोड माने एंड पॉइंट एटा गोटे एंड पॉइंट तार दीटा नोड थाय प्रत्येक एक्टिविटी रो आर एटा गोटे एटा पाई बी पाई 2 है कि 3 सी पाई 2 है कि 4
लाइक प्रत्येक एक्टिविटी रो दुईटा नोड थाए फर्स्ट को स्टार्ट नोड एडा को स्टार्ट नोड बा एडा हमें टेल नोड बोल भी कहउछे टेल नोड स्टार्ट नोड बा टेल नोड एडा को हमें कहउछे कि काने फिनिश नोड और हेड नोड ओके पिला में तो प्रत्येक एक्टिविटी रे एटलीस्ट दुईटा नोड थाउछनी गोटे स्टार्ट नोड और टेल नोड माने जहां टेल नोड माने ताहा फर्स्ट होचे हमर स्टार्टिंग पॉइंट होचे स्टार्ट नोड और टेल नोड एंडिंग पॉइंट होचे फिनिश नोड और हेड नोड हला प्लीज नोट इट डाउन हला पिला माने तापरे नेक्स्ट पॉइंट यदि चलिबो तळो तो लिख चलिबो नेक्स्ट पॉइंट होची there should not be any cross between two activities there should not be cross between any two activities that means what that means एडा गोटे एक्टिविटी 1 2 एडा गोटे एक्टिविटी 3 4 सो एडी कोन है क्रॉस हे गला गोटे एपुड जाउछ गोटे एपुड जेडी कोन क्रॉस हे गले तो एमिति रहले पड़िबोनी देयर शुड नॉट बी एनी क्रॉस जदी दीटा एक्टिविटी क्रॉस होची ताहले तुम जानो तमर नेटवर्क डायग्राम ता कोना कोटे भूल हे जायछि देयर शुड नॉट बी एनी क्रॉस बिटवीन टू एक्टिविटी क्रॉस केबे भी होबो नाही गोटे जाइबो ता ऊपर देके गोटे केबे भी जोने देयर शुड नॉट बी एनी क्रॉस जदी देखियो तमर कोन एक्टिविटी क्रॉस है देन यू आर रॉन्ग तम डायग्राम रॉन्ग अछि तो केबे हमरो दीटा एक्टिविटी क्रॉस करिवे नाही नेक्स्ट पॉइंट there should not be any cyclic activity means what for example 1 2 एटा होचे एक्टिविटी ए 2 रू 3 एटा होचे एक्टिविटी बी 3 रू अगेन 1 एटा होचे एक्टिविटी सी दैट मींस व्हाट ए रू बी को गला माने 1 रू 2 को गला ए एक्टिविटी 2 रू 3 को गला बी एक्टिविटी 3 रू अगेन 1 को पड़ा आसे दैट मींस इमीडिएट केबे होनी काई ना प्रोजेक्ट बैक करेनी प्रोजेक्ट केवल फ्रंट आगु को जाए क्लियर मने कर हमें गणेश पूजा पिला ने मूर्ति आनला परे आउ थरे मूर्ति आने जिबा कि पछू जिबा कि हमें घर करते फाउंडेशन पड़ी गला माने ता ऊपर पिलर हे आगु जिबा ना आउ थरे छात पडला पर आउ थरे फाउंडेशन को आसीबा सेटा केबे पॉसिबल नै सो हमें जल्दी हमर कोन एक्टिविटी आगु गला पछू बैक करबो नाही ए रु बाहर माने 1 रु बाहर 2 को 2 रु बाहर 3 को 3 रु 4 5 जोड़ जाय पाए आउ थरे बैक कर 1 को केबे आसीबो नाही दैट मींस देयर शुड नॉट बी एनी साइक्लिक एमिति साइक्लिक हे केबे भी रहले जो पॉइंट रो बाहर से आउ थरे से पॉइंट रे केबे भी पहुंचबो नाही क्लियर next point in a project there is one start node and one finish node in a project there is only one start node and one finish node गोटे प्रोजेक्ट रे गोटे का स्टार्ट नोड रहलो फॉर एग्जांपल माने करो ए टू स्टार्ट हला 2 3 4 5 6 7 so see this is the start node and this is the finish node ए प्रोजेक्ट में पिला माने एटा गोटे एक्टिविटी पई एटा होची स्टार्ट नोड एटा होची फिनिश नोड किंतु पूरा प्रोजेक्ट पई एटा होची स्टार्ट नोड पूरा एंड हेला कुडी एडी एटा होची फिनिश नोड तो पिला माने एडी गोटे का फिनिश नोड होले देखो फिनिश पॉइंट गोटे
आ स्टार्टिंग पॉइंट गोटे इमिति दीटा स्टार्टिंग पॉइंट रहिबो नि पिला एटा गोटे स्टार्टिंग पॉइंट एटा गोटे इमिति हबो नि दीटा स्टार्टिंग पॉइंट रहले तो भूल करूछ स्टार्टिंग पॉइंट देयर शुड बी ओनली वन स्टार्टिंग पॉइंट 2 3 स्टार्टिंग पॉइंट शुड नॉट बी अलाउड ता सहित तमे इमिति दीटा एंड करि रखि परिबो नाही दीटा एंड करि रखि परिबो नाही दैट मींस कोन हबो ना तमरो गोटे का स्टार्ट पॉइंट रहबो पड़बो जो स्टार्ट नोड गोटे ही फिनिश पॉइंट रहबो पड़बो जो फिनिश नोड there should be only one start node and one finish node in every project okay please note it हेला पिला माने कंटिन्यू करो नेक्स्ट पॉइंट देयर शुड नॉट बी एनी हैंग एक्टिविटी there should not be any hanging activity there should not be any hanging activity means what for example 1 2 3 4 that means project work is not completed because 2 end point is not possible 3 and 4 that means this is activity A this is activity B activity C activity B and C are hanging this is not completed when we will draw another two activity D and E 5 then this is the end point so जदि हमरा गोटे पॉइंट बसला ताले कि हैंग नाही पिला माने देखो स्टार्ट होला 1 रे एंड आइला 5 रे किंतु जदि एमिति दुईटा बाहरी रहि छि 6 7 तो FG दैट मींस व्हाट FG टू एक्टिविटी हैंग हे रहले माने हमर प्रोजेक्ट ता कंप्लीट हेनी दैट मींस देयर शुड नॉट बी एनी हैंगिंग एक्टिविटी माने एंड पॉइंट ता गोटे का एंड पॉइंट आसे अछि दी तीनटा आसिला हबो नाही क्लियर माने करो एडी मनरो गोटे गला ई रे कंप्लीट हे गला मन करो ई रे कंप्लीट हे गला ई रे कंप्लीट लाडू इडी मन करो एमिति गोटे बाहर करछि दैट मींस एडा कोन हैंग हे रहला एबे भी कंप्लीट हे ना एडा फिनिश पॉइंट एडा फिनिश पॉइंट आमे जानि पड़ने दैट मींस एमिति हैंगिंग हे रहि परिबो नाही देयर शुड नॉट बी एनी हैंगिंग एक्टिविटी फिनिश पॉइंट मस्ट बी वन एमिति हैंगिंग हे रहि परिबो नाही नेक्स्ट पॉइंट sometimes dotted lines are need to be drawn which are called as dummy activities sometimes dotted lines are need to be drawn sometimes dotted lines are need to be drawn which is called dummy activity for example 1 2 3 4 5 sometimes we need to draw a dotted line see this is the dotted line okay so when there should be any dotted line in the diagram then that dotted line is called a dummy activity okay जेतलो आमे डायग्राम करला टाइम रे हमको डॉटेड लाइन यूज करियो पड़िबो ताले से डॉटेड लाइन रे हमें कोले डमी एक्टिविटी आ डॉटेड लाइन केते बेले काहे यूज करबा हम प्रॉब्लम करला टाइम रे कहिबे क्लियर जदी मु जेतलो भी डायग्राम करला टाइम रे डॉटेड लाइन यूज करी ताले से डॉटेड लाइन हमें कोन कहबा डमी एक्टिविटी बोली कहबा नेक्स्ट पॉइंट always
try to use minimum dummy, always try to use minimum dummy. आमे जेते कम डमी यूज करबा सेते भलो, डमी जेते कम यूज करबा सेते भलो। जदि मते केबे भी डॉटेड लाइन ड्रा करबा को पडुची डायग्राम कला टाइम रे, नेटवर्क डायग्राम कला टाइम रे, ताले से डॉटेड लाइन टा हमें कोन कहूचे डमी बोली कहूचे, डमी एक्टिविटीज। आमे जेते कम डमी यूज करबा सेते भलो। क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन। हे साला पिला माने एबे हमें कहबा बुक रु इलिस्ट्रेशन 1, इलिस्ट्रेशन 1 ओके। बही रु हमें करया पिला माने इलिस्ट्रेशन 1 कोन कहला, ए प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 7 एक्टिविटीज, ए प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 7 एक्टिविटीज। एक्टिविटीज P Q R run simultaneously, P Q R run simultaneously। The relationship among the various activity are as follow। एक्टिविटी इमीडिएट सक्सेसर, सक्सेसर माने कोन ता पररे, सक्सेसर माने ता पर कामडा। माने करो फास्ट मु कोन करिबी, फास्ट मु घर तयार करे जे फास्ट मु बाली आनिबी, बाली आनला परे कोन आनिबी, इटा आनिबी। ता माने बाली रो सक्सेसर होची इटा, इटा रो प्रेडिसेसर होची बाली। क्लियर? दैट मीन फास्ट जो कामडा करिबी तापर जो काम करिबी सेकंड कामडा को हम कोन सक्सेसर, पूर्व कामडा को जे प्रेडिसेसर। ओके सो कौन है आमर कहला ए प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 7 एक्टिविटी। आम जो प्रोजेक्ट करछे सातटा छोट छोट काम अछि, छोट छोट सातटा काम को मिसिले हमर प्रोजेक्ट कंप्लीट होछि। सातटा काम कोन ना P Q R S T U V। तो P Q R रन्स साइमल्टेनियसली, त माने हम जेतबो भी काम स्टार्ट करले गोटे थरा तीनटा काम स्टार्ट करले, कोन करले तीनटा एक्टिविटी P Q R गोटे थरा हम स्टार्ट करले। द रिलेशनशिप अमंग द वेरियस एक्टिविटीज आर गिवन बिलो। देखो एक्टिविटी P तार इमीडिएट सक्सेसर होची S, ता माने P रु S बाहर होची, Q रु T, R रु U। एक्टिविटी V इज द लास्ट ऑपरेशंस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड इट इज आल्सो इमीडिएट सक्सेसर ऑफ द STU। ड्रॉ द नेटवर्क ऑफ द प्रोजेक्ट। सुनो पिला से फर्स्ट लाइन रे कहला एक्टिविटी P Q R रन साइमल्टेनियसली। माने को हम कोन करले कोने डायग्राम रे पॉइंट स्टार्ट करले, स्टार्टिंग पॉइंट सबल 1 सी कहूची स्टार्टिंग रु मोर तीनटा एक्टिविटी बाहरले, स्टार्टिंग रु तीनटा एक्टिविटी बाहरले। कोन बाहरले 1 2 3 4। स्टार्टिंग रु कोन बाहरले पिलाने ना, स्टार्टिंग रु बाहरले गोटे P बाहरला आ गोटे Q बाहरला आ गोटे R बाहरला। देखो पिलाने से कहूची कि प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 7 एक्टिविटी, एक्टिविटी P Q R रन साइमल्टेनियसली। ता माने स्टार्टिंग रु P Q R बाहरले, तापरे कोठी टेबल रे कहला P रो इमीडिएट सक्सेसर होची S, ता माने P रु के बाहरबो S बाहरबो, Q रु T R रु S। तापरे कहला एक्टिविटी B इज द लास्ट ऑपरेशन, V टा होची हमर शेष एक्टिविटी टा of the project and it is also immediate successor of STU। ता माने STU रो बाहरबो V, ता माने ए गोटे जगह रे STU पहुंचबे, ए गोटे जगह रे STU पहुंचबे STU। देखो मैंने P रु के बाहरला, P रु बाहरला S, Q रु बाहरला T, R रु बाहरला U। टेबल हिसाब रे प्लान टेबल जहां देछि टेबल हिसाब रे P पर S, Q पर T, R पर U हेले मु ए सब अलग अलग रखे कथा, मु गोटे जगह रे मिसेली काहे कि ए सब अलग अलग एक्टिविटी रहबा कथा। P रु बाहरले तो मोइड रखतनी P, मझिरे रखतनी Q, तळे रखतनी R, किनु मु गोटे पॉइंट रे मिसेली काहे कि गोटे पॉइंट रे मिसेर कारण होछि पिलाने कि से नेक्स्ट कहले कि एक्टिविटी B इज द लास्ट ऑपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड इज आल्सो इमीडिएट सक्सेसर ऑफ STU। STU रो सक्सेसर माने STU गोटे जगह रे मिसिलेगा सेथिरु बाहरिबो V, सेथिरु बाहरिबो V। ता माने STU रो सक्सेसर होछि V आ V टा होछि लास्ट एक्टिविटी। ता माने STU गोटे जगह रे मिसिले सेथिरु V बाहरिबो, सेथिरु V बाहरिबो, STU परे बाहरिबो V, सेथि मु STU को आंटी गोटे जगह रे मिसेली। क्लियर? जो द नेटवर्क प्रोजेक्ट हे होला इलिस्ट्रेशन 1 केवल नेटवर्क डायग्राम ड्रा करो बोली कहछि, हमर नेटवर्क डायग्राम ड्रा हे गेला। ओके प्लीज नोट इट। लिखिले पिलाने
तापर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़ अच्छी सेटा को प्राय गोटे क्लास लगी जीवो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़ अच्छी मो बे मिसे की लेक्चर बड़ करिया पई चाहूनी आज पे एतिक थाओ नेक्स्ट क्लास रे हमें देखिबा नेक्स्ट प्रॉब्लम किमिति हमें करछे आ कोन कोन नवा जिंस हमरो नेटवर्क डायग्राम रे सिखियो मिलियो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हला थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।